Hello, my dear students. Joy Jagannath. Welcome to the session. So today we are going to study about B.Ed first semester Child Development Pedagogy ର Unit 2 ଆମେ start କରିବା Theories of Development. Okay? So ଆଜି ବହୁତ କିଛି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା. So ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କ୍ଲାସକୁ ଏନ୍ଜୟ କର. Okay? ସେ let's start. Cognitive Theory of Development. କିଏ ଦେଇଥିଲେ? Cognitive Theory of Development. Piaget ଦେଇଥିଲେ. Jean Piaget. Okay? बायोग्राफिकल स्केच हिसाब रे जीन पियाजेट 1896 रे जन्म होइतिले एवं मृत्युवरण करथिले 1980 रे. ओके, सो born in 1896, died in 1980. Then he was a biologist, educationist and psychologist. Okay, सी एकाधरे जड़े बायोलॉजिस्ट थिले, एजुकेशनिस्ट थिले, और जड़े साइकोलॉजिस्ट भी थिले. ही वाज बोर्न इन स्विट्जरलैंड. ही इज नोन फॉर हिज वर्क ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट. ओके, then his theory on cognitive development and child and epistemology view are known as generic epistemology. Okay, ତାଙ୍କର ଭ୍ୟୁ କାହା ଉପରେ ଥିଲା ନା ଏପିଷ୍ଟମୋଲୋଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଉପରେ ଥିଲା, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଜେନେରିକ ଏପିଷ୍ଟମୋଲୋଜି ଭାବରେ ଜାଣୁଛେ. ଓକେ, ଦେନ୍ intelligence is something that grows and develops through series of changes. Okay, intelligence गोटे एमतिका जिनस जोटा कि आम भितर ग्रोज और डेवलपमेंट गोटे सीरीज वाइज रे आनिबाकू देई थाए. ओके, गोटे सीरीज टाइपिकली आमर जो माने डेवलपमेंट होता है, जो ग्रोथ होता है, से क्या द्वारा ना इंटेलिजेंसी इंटेलेक्चुअल द्वारा आम कॉग्निशन द्वारा होता है. ओके, देन चिल्ड्रेन आर नॉट लेस इंटेलिजेंस बट थिंक डिफरेंटली. ओके, जो थी कि कौन ना पिला माने कम इंटेलिजेंस नुहे बट से डिफरेंटली थिंक करिया को पड़िबो. देन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस व्हाट ना इट कम्स अंडर 4 टाइप्स. इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ता हमर 4 टाइप्स रे आसुची. कोन ना स्कीमा, असिमिलेशन, अकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रियम. ओके, फर्स्ट स्कीमा कोन ना एक्जिस्टिंग नॉलेज, जो नॉलेज हम पाखरे अछि ताको हमें स्कीमा बोली कहूचे. देन असिमिलेशन कोन ना एडिशन ऑफ न्यू नॉलेज, किछि न्यू नॉलेज हमें ऐड करबा ताको हमें असिमिलेशन कहबा. असिमिलेशन रु जानि जिबा जे किछि न्यू नॉलेज ऐड हबो. स्कीमा मीन्स कोन ना एक्जिस्टिंग नॉलेज, जहाँ भी नॉलेज हम माइंड रे अछि कॉन्शियस माइंड रे ताको हमें स्कीमा बोली कहि थाउ. ओके, देन अकोमोडेशन, correct and modify an existing schema. Okay, then asla equilibrium means कौन the balance between assimilation and accommodation. देखो assimilation ने कौन new knowledge add हबो, आ accommodation ने कौन ना correct and modify an existing schema. बेसिकली जदि आमे गोटे एग्जांपल नबा, देखो फर्स्ट आम जब जन को पचार तुम समुद्र देखीच, गोटे पिलाटा को पचार जे समुद्र, अरे पिला समुद्र देखीच, सो से फास्ट कौन ना जो ता पाखे जो एक्जिस्टिंग नॉलेज अच्छी सी आगो जो देखी था कि न देखी था कौट शुणी था देखी भी था सी भाव जे हाँ समुद्र देखी एमती लहड़ी आसे नील नील पानी. ओके, आ बहुत माने बहुत एरिया स्पेस नहीं कि समुद्र. ओके, देन आसला आसिमिलेशन कौन ना एडिशन ऑफ न्यू नॉलेज. जदि से टाइम कहीदेवा समुद्र केमती लहड़ी आसे पचारदेवा, सी कौन कर ना आमको न्यू नॉलेज किसी ऐड करी कहबो जे हाँ आमे देखिथिलु आउ एमती लहरी गोटे पर गोटे हेकी थक थक हेकी आसुथिला. ओके, देन सी कौन करिवो तापर ताकू गोटे किछि न्यू जिंस पचार दबा जे सेठी कोन सब अछि, से किछि न्यू नॉलेज ऐड करी कहबो जे हाँ ता पाखरे सब होटल गुडा थिला आ दुकान बाजार पड़थिला. देन से आधरे कौन कला ना किछि न्यू नॉलेज ऐड करी कहला जे हाँ समुद्र पाखरे सब ए जिंस थिला मु देखिछि, न्यू नॉलेज ऐड कला. देन अकोमोडेशन कोन ना करेक्ट एंड मॉडिफाई इन एक्जिस्टिंग स्कीमा. जदि सेही टाइम रे आमे ताको कहि देबा कि नाही तो से होटल तो नथिला, से दुकानटा तो नथिला, बोधे आउ गोटे कौन थिला, तो से टाइम रे कौन ना से भाबिबाक लागिवो. ओके, देन से प्रॉपर्ली ताको रिसर्च करिवो, जानिया को चेष्टा करिवो. जदि सेटा ठीक हेतिवो देन से कौन करिवो ना करेक्ट मॉडिफाई करिवो से जिंसटा को, दे हाँ नथिला बोधे आउ बोधे नथिवो मु भूल देखि देछि कि एबे बोधे रिप्लेस हो जाइथिवो से भाबिबो. ओके, तार एक्जिस्टिंग स्कीमा जहाँ भी देखि हाँ देखिदेली तो थिला ना कोन ताको भी कंपेयर करिवो का सहित ना एबेकार जो नॉलेज सहित. ओके, करेंट नॉलेज सहित देन से ताको मॉडिफाई करिवो. देन आसला इक्विलिब्रियम कौन ना द बैलेंस बिटवीन असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन. ओके, जो एडिशन न्यू नॉलेज को नहीं कि आ एबे जो करेक्ट मॉडिफाई करी कि से जो आउटपुट आसीबो कौन ना हो मे भी बोधे नथिबो, हाँ भी नुआ होटेलटा बोधे रिप्लेस हो जाइए आ से जगार आ समुद्र लहड़ी आसूची बट से जगह हाँ मुझे देखी होटेलटा बोधे नुआ हो जाइए आ देन से तार मॉडिफाई आउटपुट बैलेंसटा कौन आसला ना हाँ समुद्र कूल होटेलटी अच्छी. ओके, सो टिके हेक्टिक हवा बट बुझिया को सहज हम. स्कीमा, असिमिलेशन, अकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रियम. ओके, एते कि जिंस मन रखिले एते किछि जिंस माने लेखिबा को पड़िबनी, बस ए चारटा जिंस को नॉलेज रे रखिया को पड़िबो. जे स्कीमा मीन्स एक्जिस्टिंग नॉलेज जोटा कि हमर माने माइंड रे रहउची. देन असिमिलेशन मीन्स एडिशन ऑफ न्यू नॉलेज, किछि न्यू नॉलेज को ऐड करबा. देन अकोमोडेशन मीन्स कोन ना करेक्ट टू मॉडिफाई करबा.
जहाँ भी हम पाखे नॉलेज हमको मिलूँ ओके देन इक्विलिब्रियम ये चार्टा नॉलेज को हमको मन रखा पड़ो एटा कहार टाइप्स ना इट कम्स अंडर 4 टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ओके इंटेलेक्चुअल प्रोसेस एटा होची चार्टा टाइप्स सो नेक्स्ट को मूव करबा The word cognition is derived from the Latin word cognitius, which means to know. Okay, cognition means not to know. Then, according to this theory, learner perceives the total situation is the problem field. Then he find a relationship between the element of the problem. Okay, a theory हिसाब रे कौन ना learner perceives करता है कौन ना total situation को. Okay, then से तरह problem रो जहाँ भी relationship रहोगी जहाँ भी तरह माने problematic जिनसे रहोगी तारा main ये को output देता है. Okay, field हिसाब रे relationship हिसाब रे. Then it is a process of describe understanding or insight in the learner. Okay, एटा ଗୋଟେ process जो कि कौन ना learner तारा understanding जो cognition power रहोगी ताकू से prescribe करता है process रे आनता है. Okay, पिलंग माने लर्नर कौन करता है ना जहाँ भी से सीखुची ताकू से एक्सप्लेन करिया को लगी था तार इनसाइट नॉलेज द्वारा. ओके देन 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट कौन ना सेंसरी मोटर 0 to 2 years, प्री ऑपरेशनल 2 to 7 years, concrete operational 7 to 12 year, then formal operational फट ना 12 to till adulthood. ओके এই চারটা জিনিস আমি মনে রাখিবা. সো এটা হচ্ছে মেন জিন পিয়াজেট কর এই চারটা জিনিস বেসিক জিনিস. ওকে সেন্সরি মোটর, প্রি অপরেশনাল, কংক্রিট অপরেশনাল, ফর্মাল অপরেশনাল. ওকে जोटा कि सेंसरीटा 0 to 2 years, प्री ऑपरेशनलटा 2 to 7, कॉन्क्रीटटा 7 to 12 year, 12 year रु adulthood जाके होचे हमर फॉर्मालटा आसीबो. ओके देन sensory motor stage कौन जानिबा. ओके according to Jean Piaget it is the first stage of cognitive development in children. ओके बेसिकली चिल्ड्रेन नो डेवलपमेंट फर्स्ट स्टेज होची सेंसरी मोटर स्टेज. एटा होची फर्स्ट स्टेज. ओके सेंसरी मोटर सेंस. देन इट इज स्टार्ट फ्रॉम बार्थ टू 2 year, 0 to 2 year, बार्थ टू 2 year होची सेंसरी मोटर. ओके during the stages children develop their sense and motor skill and learn about environment through their action. ओके एई टाइम रे कहैते ना पिलाटी तार सेंस ऑर्गन द्वारा तार मोटर स्किल द्वारा सी किछि किछि नुआ नुआ जिनस को डिटेक्ट करिया को लागि थाए. ओके नुआ नुआ स्किल किछि लर्न करिया को लागि थाए तार सेंस ऑर्गन द्वारा. देन आमर आसला किछि नुआ नुआ एक्शन से करि थाए तार मोटर फंक्शन को डेवलप करिया को लागि थाए. देन प्री ऑपरेशनल स्टेज एई टाइम रे कहै थाए ना अकॉर्डिंग टू द जीन पियाजेट इट इज द सेकंड स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन. ओटा एटा होची सेकंड स्टेज. देन इट स्टार्ट फ्रॉम 2 to 7 years. ड्यूरिंग द स्टेज चिल्ड्रन डेवलप लैंग्वेज एंड एब्स्ट्रैक्ट थ्रो दे डोंट यूज लॉजिक टू मैनिपुलेट इन्फॉर्मेशन. ओके एई टाइम रे कहै थाए ना पिलाटी तार माने तार एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को डेवलप करि थाए तार लैंग्वेज को डेवलप कर थाए. ओके से माने से जहाँ माने तार लॉजिक थिंकिंग को से अप्लाई कर न थाए किछरा माने तार ता मन रे किछि भी माने क्रिटिकल थिंकिंग न थाए ताकू जे जहाँ मैनिपुलेट कले भी से मैनिपुलेट हे जिवो काहे कि ना बहुत छोटा लेवल पिला बहुत छोटो लेवल नै माने बहुत कुनी पिलाटे. ओके जे तो 2 to 7 years रे रहउची. ओके देन এই টাইমରେ ସେ ଲଜିକାଲି ବି ତାର ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥାଏ ବଟ୍ ମାନିପୁଲେଟିଭ୍ ବି ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଏ. ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଲେ ବି ସେ ଆମ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ. ଦେନ୍ ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିଜିମ୍ କ'ଣ ନା ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିଜିମ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ କ୍ୟାନ୍ ସି ଏ ସିଚୁଏସନ୍ फ्रॉम अनदर पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू. ओके जो कि कौन ना पिलामाने अनदर पर्सन सिचुएशन कौन ताको देखिबेनी सी ता कांदीबारे व्यस्त तमे मते सेही खेळना दबो माने दबो मु ए कामटा करी माने करबी जिद्दी माने पूरा नंबर 1 जिद्दी. ओके सो तांको में कोन कहछु ना इगोसेंट्रिज्म स्टूडेंट नो तो इगोसेंट्रिज्म चाइल्ड. ओके देन एनिमिज्म कौन ना इट इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस स्टेज. ओके children between 4 and 6 year of age regard everything to be alive unless it is broken or damaged. Okay basically animism ने कौन रहउची ना पिला मानकर माने कैरेक्टरिस्टिक्स तांकर केमती रहउची ना सेटा बेसिकली 6 year of age रे स्टार्ट होउची. ओके जोटा कि कौन ना पिला माने अनलेसली सब जिंस भांगिया को लागिबे एनिमिज्म करी कि माने जेमती देखिनाती कोन सेटा जिंस पाई गले तो खेलिया को लागिबे एपट सेपट करी कि यू या करी कि. ओके देन सेटा होउची अनलेसली समान सब जिंस को ब्रोकन और डैमेज करिया को लागि थांती. ओके देन असला concrete operational stage. What is now it is the third stage of cognition Piaget theory. It is 7 to 12 year. Okay जोटा कि the concrete operational stage is a stage where children being think logically and vocationally. Okay जो देखो फास्ट आम जाना जे कंक्रीट ऑपरेशनल कौन होता है ना पिला मानकर माने तांकर टिके लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट होता है. ओके
माने किए माइला किए कौन कला ओके तो टिके भितर राग रुषा एसबू आसवाक लगे धीरे धीरे पिलाने टिके क्रिटिकल थिंकिंग कराया लगे टिके निजक आनालाइज कराया लगे एनवायरनमेंट को स्टडी कराया लगे जी आम चारिपाखे कौन हो बापा मामा आमर कजन आम सांग साथी मैंने आमको केमी बिहेव कर ओके जेहेतु 7 ରୁ 12 इयर भितर पिला रोच तो पिला भितर मोस्ट खाली डेवलपमेंट आसी जाइए ओके जहाँद्वारा कि कौन ना से लॉजिकल थिंकिंग वर्टिकली हवा लगे वोकेशनल थिंकिंग हवा लगे ओके देन सॉरी लॉजिकल एंड रैशनली सॉरी लॉजिकल एंड रैशनली से आटा मतलब भी टाइप का देखा ओके सॉरी रैशनल थिंकिंग माने कोटा ठीक कोटा भूल से मैंने परफेक्ट जजमेंट देवा लगे ओके तुम्हें भूल कह मैंने भूल ठीक कह मैंने ठीक एते प्रॉपर नदेले भी बट से बेसिक जिनस जानवा को पाइबे देन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कौन स्टार्ट टू थिंक लॉजिकली ओके ये टाइम से लॉजिकल थिंक करने लगे देन बिकम क्रिएटिव हे चिल्ड्रेन गेन एबिलिटी टू थिंक इन अब्स्ट्रैक्ट कैन सॉल्व कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन चाइल्ड कैन फॉर्मुलेट न्यू हाइपोथेसिस ओके ये टाइम कौन ना पिला टिके दिमाग वाला ओके जोटा आम कही था कौन ब्रेनी धीरे धीरे से डेभलप कराया लगे पिला माने गोटे ऊपर लेवल को जीवा लगे जो कि से कौन निजर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी सॉल्व कराया लगे कैलकुलेशन कराया लगे मिशाण फेड़ाण गुणन हरण एसबू जिन शिखा लगे ओके पिला धीरे धीरे टी निजक ग्रोन अप करेंगे जो कि न्यू न्यू हाइपोथेसिस भी करेंगे देन आसला एजुकेशनल इम्प्लिकेशन कौन रोचे ना प्रोवाइडिंग भेराइटी ऑफ एक्सपीरियंस ओके जो कि माने ए टाइम रे आम पिला कौन इम्प्लिकेशन दबा ना भेराइटी ऑफ एक्सपीरियंस दबा पिला ओके एम्फासाइज ऑन थिंकिंग एंड रीजनिंग पिला रीजनिकाली थिंकिंग पिला रीजनिंग एबिलिटी डेवलप करने चेष्टा करवा थिंकिंग एबिलिटी डेवलप करने चेष्टा करवा देन ग्रेटर एम्फासाइज ऑन डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्ट ओके देन एम्फासाइज ऑन द मास्टरी ऑफ लैंग्वेज ओके पिला लैंग्वेज रे मास्टरी करने चेष्टा करवा जमी से लैंग्वेज सेंस को भल भाव में निजर आउटपुट को से पारे ओके ग्रेटर एम्फासाइज ऑन डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्ट ओके पिला कौन ना कॉग्निशन पावर इंटेलेक्चुअल पावर को डेवलप करें फोस्टर करिया ओके आम डेवलपमेंट न्यू सब जहाँ भी अरेंजमेंट रोचे आम गिवन अप करवा देन साइकोसोशियल थ्योरी डेवलपमेंट किए देते ना एरिक्सन पियाजेट करो चैप्टर खत्म एवं आसले किए ना साइकोसोशियल थ्योरी डेवलपमेंट आपको एरिक्सन देते फर्स्ट कॉग्निटिव थ्योरी में जान ले जीन पियाजेट देन साइकोसोशियल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट एरिक्सन देते एरिक्सन प्रपोज्ड ए थ्योरी ऑन दिस बेसिक्स ऑफ सोशल एनवायरनमेंट बेसिकली एरिक्सन कर ए थ्योरीटा साइकोसोशियल थ्योरी जोटा कि कौन ना आम सोशल एनवायरनमेंट उपर बेस्ड रोचे दिस थ्योरी इज कॉल्ड साइकोसोशियल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू हिम ह्यूमन डेवलपमेंट एंड पर्सनालिटी आर कैटेगराइज्ड इन 8 स्टेज ओके बेसिकली कौन ना एरिक्सन कर जो माने से जो थ्योरीटा देइछंती तादरे पर्सनालिटी को से 8 कैटेगरी रे डिवाइड करिसंती स्टेज 1 कौन ना ट्रस्ट और मिसट्रस्ट ओके ट्रस्ट कौन रोचे ना इट इज द पॉजिटिव इट इज न्यूली born infant whole depend on his mother she provide to satisfaction on of physical needs they develop a positive attitude of their personality as a torch towards their mother hope is the basic strength okay basically देखो एते गुडा पढ़िला बेलू मुंड पर टीण हो तमें भी बुझे तुमको प्रोब्लेम हम बट मुझे तुमको सिंपली बुझाऊँगी दे ट्रस्ट मीन्स कौन मिस ट्रस्ट सॉरी मिस ट्रस्ट मीन्स कौन ओके सो लेट्स स्टार्ट देख ट्रस्ट हूँ गोटे पॉजिटिव जिनस ओके जोटा कि कौन ना न्यूली बॉर्न माने बेबी मानक भितर भीतर डिपेंड्स होता है से मदर ऊपर फास्टली ट्रस्ट करने लगी था भीतर साटिस्फैक्शन आसवाक लगी था फिजिकल नीड छोट पिला दरकार थाए ओके दे डेवलप ए पॉजिटिव एटीट्यूड देयर पर्सनालिटी एंड ट्रस्ट टुवर्ड देयर मदर ओके से टाइम कौन होता है ना पिला भीतर पॉजिटिव एटीट्यूड आने लगी था जेहेतु आमर कौन ना स्टेजेस को 8 टाइप रे डिवाइड कर सब कुछ जिनसर मेरिट रोचे डिमेरिट भी रोचे देन आसला कौन मिसट्रस्ट कौन ना इट इज अ नेगेटिव एटा पॉजिटिव एटा नेगेटिव एथरे कौन ना इट इज फिजिकल नीड आर नॉट सैटिस्फाइड दे डेवलप ए कंप्लीट मिसट्रस्ट विथ देयर मदर केयरटेकर ओके बेसिकली कौन ना से टाइम रे कौन ना जदि आम ट्रस्ट करुचे तो आम कौन कर ना मदर को आम फुली ट्रस्ट करुचे बट मिसट्रस्ट हेल्ले कौन हो ना आम प्रॉपर्ली गोटे माने डिपेंडेबल होकर ट्रस्ट कर ना ओके मिसट्रस्ट विथ देयर मदर एंड केयरटेकर देन इट मिसट्रस्ट डेवलप दे
abnormal characteristics in future life, his personality. Okay, the stage will lead to psychological crisis in their personality. जदि पिला को प्रॉपर केयर न मिलिबो, ओके, जदि ता मदर ठार तो प्रॉपर अफेक्शन न मिलिबो बा तार केयर टेकर जी रहउची ताको जदि प्रॉपरली केयर न नबो, जेहेतु सोशली माने सोशल एनवायरनमेंट ऊपर जाउची, तो जहाँ को आमे पिला को जहाँ भरोसा आमे छाड़ी जीव, जदि तार प्रॉपर केयर न नबो कौन हो ना पिलार भविष्य में ताको साइकोलॉजिकल क्राइसिस देखा मिलिबो। ओके, तार साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर आसीजिवो। सो पिला को प्रॉपर वे रे आमे केयर नबा दरकार, जोटा कि ट्रस्ट और मिसट्रस्ट ऊपर डिपेंड करूची। Then ଆସିଲା stage 2 କ'ଣ ନା antinomy ଆଉ shame. Antinomy means କ'ଣ? The child develop a kind confidence in the as they grow in physical and mental strength. They became automatic have self control in themselves. Okay, basically will is develop in this stage. କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ପିଲାଙ୍କର ना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। ओके, से मैंने निज को कॉन्फिडेंट फिल कर विल पावर डेवलप होता है। बट सेम रे कौन ना इट इफ ऑटोनॉमी काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस इज नॉट डेवलप, दे फील सेम एंड गिल्टी अबाउट देमसेल्फ इन मैनिपुलेटिंग थिंग्स, दे डाउट अबाउट देमसेल्फ एंड फील इंटीरियर अबाउट देमसेल्व्स। ओके, बेसिकली कौन ना जो टाइम रे पिला निज को कॉन्फिडेंट फिल करथांती, जोटा कि हमर पॉजिटिव वे रे जाइछि, एंटोनॉमी रे जाउछि, जोथरे कि पिला माने निज को कॉन्फिडेंट फिल करथांती, से माने मेंटली प्रिपेयर्ड थांती, मेंटली स्ट्रांग थांती, निज को गोटे निजर न्यू विल पावर को से माने डेवलप करथांती। बट सेम रे कोइ थाए जदि तांको भितर कॉन्फिडेंस रो लैकअपनेस आसी थाए, तांको जदि कॉन्फिडेंस आसी न थाए, सेई टाइम रे पिला माने को सेम बा लाज लागि थाए। ओके, देखो जदि गोटे पिला स्टेज ऊपर को जीवो किसी गोटे परफॉर्मेंस दवापाई, डिबेट दवापाई, धर डिबेट दवापाई जीव, जदि तार कॉन्फिडेंटली जाइथिबो बट से जदि भलो से डिबेट को प्रेजेंट न करि पाइला, मधुरी जदि तार किछि प्रॉब्लम आसिला, ओके, सो सेई टाइम रे कोन ना ताको सेमनेस आसी जीव, ताको लाज लागिबो जे मु देई पारिलिनी भलो से डिबेट को मु कंज्यूम करि पालिनी, सो सेति पे ताको सेम साइनेस आसिया लागिबो। ओके, सो तार कौन हम निज ऊपर डाउट आसो जे मु कोन एते खराब, मु एते भल से प्रिपेयर कली बट हेई पालानी। ओके, सेटा होची जिंस। देन आम जाना स्टेज 3 रे कौन ना इनिशिएटिव एंड गिल्ट। कौन ना पर्पज इज ए basic strength develop. The child want to produce something new, develop a kind of initiative. They will be more competitive and creative. Okay, जो कि कौन ना पिला माने मोर कॉम्पिटेटिव और क्रिएटिव वर्क करिवे, तांको भीतर स्ट्रेंथ ऑफन हबो, चाइल्ड कोन करे न्यू जिंस सब प्रोड्यूस करिया को लागिवे। देन गिल्ट रे कौन, इफ दे डोंट डेवलप द बेसिक स्ट्रेंथ दे विल फील गिल्टी। ओके, जल्दी जदी पिला माने तांकर बेसिक स्ट्रेंथ हिसाब रे से निज को डेवलप करिवे नाही, तो से निज भीतर गिल्टी फील करिवे। Parents, teachers should provide proper opportunity to the children to develop positive attitude and keep away from the guilty and make them successful in their personality. Okay, देखो आप बेसिकली पिला मानू केमते गिल्टी फील हबनी ता पई हम पेरेंट्स माने हम टीचर माने हे माने कोन करे प्रॉपर्ली पिला को गाइड करिवे, जादर कि पिला मानू केबे भी कोन से जिंस रे गिल्टी फील हबो नाही, से माने प्रॉपर्ली कॉन्फिडेंट हे कि इनिशिएटिव हे कि सब वर्क को कंप्लीट करिवे। देन असला स्टेज IV 4 रे कौन ना इंडस्ट्री आउ इनफेरिटी। कौन ना द बेसिक स्ट्रेंथ डेवलप इन द स्टेज इज कॉम्पिटेंसी इन द चाइल्ड कम फॉरवर्ड एक्सेप्ट चैलेंज एंड टू डू हार्ड वर्क। ओके, एथरे कौन ना पिला माने निज को निज चैलेंज एक्सेप्ट करिया को लागिवे, जे से माने हार्ड वर्क करिवे, निजर वर्क माध्यम से माने निजर बेटर आउटपुट देबे। ओके, देन इनफेरिटी कौन ना द चाइल्ड इज नॉट कॉम्पिटेंट एनफ, इट इज नॉट हार्ड वर्किंग, दे डेवलप इनफेरिटी कॉम्प्लेक्स एमंग अदर्स। ओके, जो कि कौन ना से मैंने अन्य को देखिकी डरी जीवे। ओके, निज भीतर इनफेरिटी आसीबे जे मु पारिबी ना पारिबिनी, हार्ड वर्क करिया को डरिबे। ओके, तांको भीतर गोटे इनसिक्योरिटी आसीबा को लागिबो। देन असला स्टेज B आइडेंटिटी आउ रोल कन्फ्यूजन। कौन ना द फील्ड इज बेसिक स्ट्रेंथ डेवलप इन दिस स्टेज। कौन सॉरी fidelity is a basic strength developed in this stage. There are to be identified in their peer group. Okay, एथरे कौन होता है ना आइडेंटिफाई रे गोटे बेसिक डेवलपमेंट पिला मानकर होता है, जोटा कि तांकर पीयर ग्रुप द्वारा से माने आइडेंटिफाई करिथाନ୍ତି। दे फील सुपीरियर व्हेन दे आर आइडेंटिफाइड बाय देयर पेरेंट्स। ओके, देन रोल कन्फ्यूजन कौन, if the child is not identified by his parents, teacher, peer groups, etc., the child develops role confusion and think that they are not important and their role is not important in their family and school. Okay, तो पिले मानन को सबले कोन करबा ना आइडेंटिफिकल वे रे हमें रखिबा, जे प्रॉपर जे कोनसी जिंस रे प्रॉपर माने प्रतिटी पिला को हमें आइडेंटिफिकेशन दबा, जे
ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷରେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସୁପିରିୟର ଫିଲ୍ କରେଇବା ଯେ ପିଲାମାନେ ଆମ ପାଇଁ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବୋଲି। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ନ ଦେବା, ତାଙ୍କର ପ୍ରେଜେନ୍ସକୁ ଯଦି ଆମେ ମାଇନେ ନ ରଖିବା, ଓକେ, ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରେଜେନ୍ସକୁ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କର ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ନ ଜଣେଇବା ଯେ ତାଙ୍କ ଏହମିୟତ କ'ଣ ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ, ତ ସେମାନେ ନିଜକୁ କ'ଣ ଭାବିବେ ଯେ ଆମର ତ କିଛି ରୋଲ୍ ନାହିଁ ଆମ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ, ଆମ ସ୍କୁଲରେ ତ ଆମର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ନା ରୋଲ୍ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଆସିଯିବ ଯେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଅଛୁ। ଓକେ, ଯଦି ଆମକୁ କେହି ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଆମର ଯଦି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ କିଛି ନାହିଁ, ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟଲି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଡେଫିନେଟଲି ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଡିସଅର୍ଡର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ ହେବାକୁ ଲାଗିବ, ମାନେ ଏଇଟା ମାନେ ଗୋଟେ ରିଅଲ୍ କଥା। ଓକେ, ଦେନ୍ intimacy or isolation. Love is basic strength develop in the stage their thinking become clear, they develop intimacy. Okay, relationship from their loved ones. Okay, basically କ'ଣ ନା ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହିତ, ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କ ସହିତ, ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଇଣ୍ଟିମେସି ରହିବା ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ପିଲାମାନେ ଯେତେ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇକି ରହିବେ, ସେତେ ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ବଟ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ ହେଇକି ରହିଲେ, ଇଫ୍ ଇଣ୍ଟିମେସି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଡେଭଲପ୍ ଦେନ୍ ଦେ ଆର୍ ଆଇସୋଲେସନ୍। ଯଦି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କ ସହିତ, ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟିମେସି ନ ରଖିବେ, ତ କ'ଣ ହେବ ନା ଗୋଟେ ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ରହିଲା ଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିବ। ଓକେ, ସେମାନେ କିଛି ବି ଜିନିଷକୁ ସେୟାର କରିବେ ନାହିଁ, ନିଜେ ଟ୍ରମାଟାଇଜ୍ ହେଇଯିବେ, ଆନଜାଇଟିନେସ୍ ତାଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିବ। ଦେନ୍ ଦେ ଗେଟ୍ distracted or separated from their parents and relatives. Okay, so B.I. generativity and stagnation. The basic strength developed is care, generativity asuchi, then the individual stage is more productive and creative. Okay, generative होउछ गोटे इंडिविजुअल स्टेज जोथरे कि पिला माने मोर प्रोडक्टिव हेतांती आ क्रिएटिव भी हेतांती, दे वांट टू क्रिएट और जनरेट। से टाइम रे पिला माने न्यू जिंस क्रिएट करिया को जनरेट करिया को लागिथांती। देन स्टैग्नेशन कोन, इफ दे आर नॉट इनोवेटेड क्रिएटिव देन दे डेवलप स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन मींस कोन ना जदी से किछि नय जिंस न करि पाइले देन ताक छाडी फपाडी दौड़िबे। ओके, सो अधर छाडी दो ताक हम स्टैग्नेशन बोली कहितो। देन ताकर मन तो हबनी आ किछि नय जिंस इनोवेट करिया को। ओके, then stage B.I. कौन ना integrity आउ despair कौन ना wisdom is the basic strength developed in the stage all the positive personality of child from stage to stage B.I. is integrated. Okay, basically कौन ना wisdom हिसाब रे पिला माने कौन करते हैं basic strength हिसाब रे से माने निज को develop करते हैं निज age हिसाब रे। Okay, all the positive personality जहाँ भी रहिला सब of child stage 1 to stage BBI भीतर ये सब integrated रे आसुची। Okay, then despair kono, if the integration of various stages of their personality trait are not possible then their result is despair. Okay, sorry, despair। तो जल्दी जल्दी ए जहाँ सब हम पढ़िले पॉजिटिव वे रे जदि से गुडा किछि भी न होला, से गुडा जदि किछि पिला मनक भीतर डेवलप न होला से क्वालिटी गुडा, ओके, देन को हबो ना जहाँ भी न्यू पिला निज को डेवलप करिया को चाहुथिबो तार सब डिस्पेयर हे जिवो। डिस्पेयर मीन्स कौन ना किसी भी कौ जिन क्या सहित मेल खाइबनी, सब एपट सेपट हो पिलार टोटाली मेंटल हेल्थ फिजिकल माने स्ट्रेंथन जहाँ भी पिलार न्यू सब डेवलपमेंट होगा लगी से गुड़ा सब किसी भी भल भाव ग्रो अप बा डेवलपमेंट हो पार नाही। देन आसला एजुकेशनल इम्प्लिकेशन कौन ना प्री स्कूल, एलिमेंटरी एंड मिडिल स्कूल, सॉरी मिडिल स्कूल, देन सेकेंडरी स्कूल। ओके, सो फर्स्ट आम जाना प्री स्कूल। Child develop trust, autonomy, initiative. Teacher needs to be tolerant of mistakes and enjoys children in various activity. Okay, preschool कौन होता है ना child develop जो थे कि पिला मनकर ट्रस्ट डेवलप होता है कौन थे ना ऑटोनॉमी दे, इनिशिएटिव दे, टीचर नीड द्वारा। ओके, सब टीचर मैंने कौन करते ना पिलांकर मिस्टेक को टॉलरेट करथांती जो थे कि कौन ना पिला माने निजो को वेरियस एक्टिविटी रे पिला माने निजो को गोटे स्पेशल भाबी कि से माने निजरो स्कूल लाइफ को एंजॉय करिथांती। ओके, से टाइम रे पिला मानक आमे कोन ना बेसी किछि माने गाइड कर न थाउ, पिला मानकर जेमिति इच्छा से माने निजो को सेही हिसाब रे डेवलप करिथांती। ओके, ताकर जहाँ भी मिस्टेक हेई थाउ भंगार हो जैसे जहाँ भी करंतु ताको आमे टॉलरेट करिया कथा करिवु। देन एलिमेंटरी एंड मिडिल स्कूल कौन होते ना चिल्ड्रेन एनकाउंटर इंडस्ट्री। ओके, teacher have to make sure children set realistic goals. Teacher provide support to children who full discourage. ओके, देखो ए टाइम रे कौन ना प्री स्कूल ले पिला को किछि को आबनी पूरा सी होचंदी एक करे बड़ा विसिगेशन। ओके, देन एलिमेंटरी स्कूल आसिले ए टाइम रे को हबो ना चिल्ड्रेन एनकाउंटर इंडस्ट्री। ओके, पिला को हमें प्रॉपर्ली केयर नवा, प्रॉपर्ली ताको गाइड अप करेबा काहे ना टीचर हैव टू मेक श्योर चिल्ड्रेन सेट रियलिस्टिक गोल। टीचर से टाइम रे पिला मानकर रियलिस्टिक गोल को सेट करिवो जे पिला माने को एरी गले ठीक भाबरे से माने निजो को निजर एजुकेशनल इम्प्लिकेशन को ठीक भाबरे से
आगे नहीं पारे प्रोवाइड करें ओके देन टीचर प्रोवाइड सपोर्ट चिल्ड्रेन हु फील डिस्करेज जो पिला माने निजको डिस्करेज फील करुवे निजको इनिशिएटिव फील करू नथिबे ओके सो तांकु टीचर कौन करेंगे ना सपोर्ट देबे तांकु टीचर मोटिवेट करेंगे ओके देन आसला सेकेंडरी स्कूल टीचर शुड गिव स्टूडेंट मॉडल फॉर कैरियर चॉइस ओके टीचर शुड नीड टू हेल्प चिल्ड्रेन टू डिस्टोर देयर पर्सनल प्रॉब्लम ओके देन रिजॉल्व देयर पर्सनल प्रॉब्लम देन टीचर नीड टू बी टॉलरेंट ओके सो सेकेंडरी स्कूल कौन ना टीचर शुड गिव स्टूडेंट पिला मानकु कौन ना कैरियर मॉडल चॉइस टीचर माने जणे देबे जे एई कैरियर एई बाटर गले तू भलो आगु को निजरो परफॉर्मेंस देई पारिबु ओके फैसिलिटेट करिवे टीचर सेकेंडरी स्कूल जोटा कि पिला मानकु नियति होबर दरकार काहे ना पिलांकर निजर प्रॉब्लम पिला निजे सॉल्व करिया को लागिबे ओके निजर पर्सनल प्रॉब्लम जहाँ भी थिबो देन आसिला हमर थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट आकु देथिले कि ना कोहलबर्ग ओके बहुत धैर्य धरिया पड़ो कहीं ये सब जिनस एकाथरे मन रही बट जदि आम गोटे ट्रिक वाइज मन रखा मन रखिपार आराम से मन रोके सो एरिक्शन गले एबे आसले कि आमर ना कोहलबर्ग ओके थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट सो लेट्स स्टार्ट Moral development is the process by which an individual develops proper attitude and behavior towards other people in society based on social and cultural rule and laws. Okay. बेसिकली कौन ना मोराल डेवलपमेंट आम केमती होता है ना मोरालिटी डेवलपमेंट जोटा कि कोहलबर्ग देते जो कि कौन ना प्रॉपर्ली आम बिहेवियर आम आटिट्यूड आम एप्टीट्यूड आम वर्ड्स को आम आम निज कंट्रोल रखा सोसाइटी केमी आमको निजक चलिया हम सोसाइटी निजक केमी गोटे बेटर वे आमको रिप्रेजेंट करने को हम केमी निज आम आम मोरालिटी को ध्यान रखिकी निजक गोटे बेस्ट ऑप्शन रे आम प्रेजेंट करवा सेटा आम लॉ हिसाब रे आमर एक्ट हिसाब रे आमर रिजन हिसाब रे ओके कास्ट क्रीड हिसाब रे आम निजक केमी गोटे बेटर वे रे प्रेजेंट करवा सेटा आम कौन शिखा मोरल डेवलपमेंट थ्योरी ओके सो देन इट टीचेस एन इंडिविजुअल टू आइडेंटिटी और द फिगर आउट व्हाट इज राइट और रॉन्ग ओके जो कि कौन ना सोसाइटी रे कोटा राइट और कोटा रॉन्ग ओके ता विषय में आम जानवाक पाइबा देन कोहलबर्ग वाज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एंड ही प्रपोज्ड दिस थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट ही ऑब्जर्व दैट मोरल डेवलपमेंट इज एन इंडिविजुअल फॉलोज ए पैटर्न एंड जस्ट कैन फ्रॉम पेरेंट्स और एल्डर इट हैज स्टेज अबाउट 6 ओके बेसिकली कौन ना कोहलबर्ग होचन जने अमेरिकन रो साइकोलॉजिस्ट ओके ही प्रपोज्ड कौन करथिले ना मोरल डेवलपमेंट थ्योरी को से प्रपोज करथिले देन इंडिविजुअल फॉलोज ए पैटर्न एंड जस्ट कैन फ्रॉम ओके जो कि कौन ना से कहते इंडिविजुअली ये पैटर्न को फॉलोज करवा जो कि पेरेंट्स और एल्डर मान द्वारा ये पैटर्न को आम फॉलोज करता जो कि इट हैज स्टेज अबाउट 6 ओके देन पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन जो कि कौन ना गोटे चाइल्ड को आम पनिशमेंट दबा ताको ओबीडियंस हवा शिखेबा ओके देन कौन ए चाइल्ड डिसाइड व्हाट इज रॉन्ग ऑन दिस बेसिक ओके ऑफ व्हाट इज पनिश्ड तो पिला माने जानिया दरकार जे कोउथि ताको पनिश करा होची को जिनस रे से माने भूल कले बोली हियर एडल्ट्स हैव सुपर पावर बिकॉज दे आर एडल्ट हैव द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू डेवलप द मोरल्स ऑफ द चाइल्ड ओके हियर पनिशमेंट गाइड्स टू चाइल्ड देख पिला मानकु कोन करबा ना हमें ओबीडियंस केमिति हेबे सेटा शिखेबा तांको पनिशमेंट द्वारा तांकर प्रॉपर भूल कोन तांको जणैबा जादर के कोन ना से माने प्रॉपर गाइड को पनिशमेंट को ठीक भाव में बुझी पारे ताकर मोरालिटी कौन रोचे ताकू से माने ताकू ठीक भाव में जानी पारे जे को भूल द्वारा से माने को पनिशमेंट पाइले बोली ओके देन इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज कौन ना हियर इंटरेस्ट शिफ्ट टू रिवार्ड रादर देन पनिशमेंट दैट मीन्स नॉट पनिशमेंट रादर रिवार्ड गाइड ए चाइल्ड ओके बेसिकली कौन ना इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज कौन कहूँ ना ये पिला इंटरेस्ट को शिफ्ट करिया कौन ना रिवार्ड आउ पनिशमेंट को ओके देख जदि गोटे पिला कौन से भूल करुच्ची ताको आम सॉफ्टली पनिशमेंट देवा बट जदि आम से पिला को से भूल नेक्स्ट टाइम करिया को चाहिबा नाही ताको आम रिवार्ड ग्रांटेड करदेवा जे तू जदि ये भूल न करिबु आम तते ये चॉकलेट दबु तू जदि ये भूल न करिबु तू जदि भल कामटा करिबु आम तते ये चॉकलेट दबु रिवार्डेशन करदेवा ओके देन म्यूचुअल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कौन रोची ना it is a good boys or good girls level or stage okay more importance is given to loyalty trust and respect okay mutual interpersonal relationship कौन कहूँ ना एटा
गुड बॉयज और गुड गर्ल लेवल स्टेज को रिफर करुच्ची जोटा कि कौन ना लॉयल्टी ट्रस्ट और रेस्पेक्ट को डिनोट करुच्ची देन सोशल सिस्टम कॉन्सेंस लो ओरिएंटेशन it is the stage all the small child makes them out their family and involve with society and also follow their social rule and laws okay जो कि कौन ना आम सोशल सिस्टम को सोशल लॉ को कंसीडर करवा जहाँ भी आमर लॉ रोचे जहाँ भी आमर माने रूल एंड रेगुलेशन रोचे ताको आम फॉलो करवा देन सोशल कंट्राक्ट एंड इंडिविजुअल राइट चाइल्ड अंडरस्टैंड द मोरल राइट एंड द लीगल राइट आर नॉट ऑलवेज सेम ओके पिला मानक आम कौन करवा ना मोरल राइट आमर जहाँ रोचे लीगल राइट आमर जहाँ रोचे ताको आम पिला मानकू ता प्रति कॉन्शियस कराइबा ओके देन यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल कौन द यंग पर्सन डेवलप एंड फॉलोज द सेल्फ चूजन एथिकल प्रिंसिपल इन डिटरमिनियस व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग एंड हियर कॉन्सेंस विन ओवर लॉस ओके देखो यूनिवर्सल एथिकल एंड प्रिंसिपल होउची कि चाइल्ड कौन करिवो बा पर्सन कौन करेंगे ना निजर प्रिंसिपल जहाँ रोचे निजर जहाँ भी एथिकल वैल्यू रोचे से निजे जज करेंगे जो कौटा राइट आ कौटा रॉन्ग ओके ताद्वारा कौन हम ना कॉन्शियसनेस स्टार्ट होगा लगे ओके से लॉज प्रति से कॉन्शियस हे सो देन आसला एजुकेशनल इम्प्लिकेशन कौन स्कूल शुड प्रोवाइड सुइटेबल एनवायरनमेंट फॉर चिल्ड्रेन टू इनकलकेट मोरल वैल्यू इन देम इन ए नेचुरल वे ओके जो कि कौन ना स्कूल कौन कह ना पिला सुइटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर पिला इनकलकेट लर्निंग प्रोवाइड कर जहाँद्वारा कि कौन ना नेचुरल वे रे पिला लर्निंग करेंगे देन स्कूल्स कुड बी सिंपैथेटिक टू प्रॉब्लम ऑफ चिल्ड्रेन एंड स्पेशली adolescence ओके बेसिकली कौन ना स्कूल नेचरटा पिला प्रति सिंपैथेटिक आउ चिल्ड्रेन को प्रति कौन सॉरी आडल्ट मानक कौन जहाँ भी प्रॉब्लम हम पिलांकर स्कूल ताको जिन सॉल्व कर पारथुबो ओके स्टडी वाइज रे पिलामानकर जहाँ भी इन द सेंस जहाँ भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आसीबो ताकू स्कूल प्रॉपर केयर सहित सॉल्व करूथुबो ओके गोटे सिंपैथेटिक वे रे देन अरेंजमेंट शुड बी प्रोवाइडेड फॉर हेल्दी सेक्स एजुकेशन ओके पिलामानको कौन करबा ना आम एमती अरेंजमेंट करिया जे पिलामानको आम हेल्दी सेक्स एजुकेशन भी प्रोवाइड करि परिबा अरेंजमेंट शुड बी प्रोवाइडेड फॉर हेल्दी सेक्स एजुकेशन सॉरी डबल लिखा जाय ओके देन थ्योरी ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट आसिला ओके ताकू के सिगमंड फ्रॉइड ओके साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी सिगमंड फ्रॉइड देथिले जोटा कि सिगमंड फ्रॉइड वाज एन ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट and founder of psychoanalysis theory which are clinical method to treat psychopathology or mental illness okay then this is the theory of basic the personality formed by psychologists according to their own line of thought ओके बेसिकली तांको हिसाब रे कौन ना पर्सनालिटी को फॉर्म करिया जो साइकोलॉजी रोची ताको हमें केमती तांको थ्योरी हिसाब रे ताको हमें केमती वन लाइन ने बुझीबा से त्याको बुझीचंती ओके देन पर्सनालिटी को केमती हम निज वे रे फॉर्म करिथाउ ओके साइकोलॉजी हिसाब रे केमती हम माने ताको वे अप करिथाउ से जिंसरे जानिबा according to Freud a human personality is generated by the three element which are सिगमंड फ्रॉइड के हिसाब रे आमर ह्यूमन पर्सनालिटी कौन ना तीनटा वे रे डिवाइडेड है तीनटा एलिमेंट रे डिवाइड है कौन ना ईद इगो सुपर इगो ओके आम पर्सनालिटी तीनटा वे रे डिपेंड करुची जोटा कि ईद इगो आउ सुपर इगो कौन दीज आर थ्री लेयर्स ऑफ माइंड एंड देयर कॉम्बिनेशन रिजल्ट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी ओके यहाँ हूँ आम माइंड रो तीनटा लेवल ओके जोटा कि आम पर्सनालिटी को डिफरेंटली बनई थाए पर्सनालिटी को डिफाइन करि थाए ये तीनटा लेवल ओके कौन ना ईद कौन इट इज द अनकॉन्शियस माइंड विथ ए मैन इंस्टिंक्ट एंड इनेट डिजाइन ओके इट नीड्स इमीडिएट सैटिस्फैक्शन इट इज फाउंड फ्रॉम बर्थ ओके ईदटा आमर कौन ना जन्मरू अच्छी ओके जोटा कि कौन ना आम अनकॉन्शियस माइंड रे आमर एटा थाए ओके जोटा को आम इमीडिएटली सैटिस्फैक्शन आम करथाउ ईद द्वारा then asla ego it is the consciousness power of taking decision intellect and reasoning okay ईद गला कौन ना आमर जोटा कि आमर अनकॉन्शियस माइंड थाए बट इगोटा आमर कॉन्शियस माइंड थाए कॉन्शियसनेस माइंड थाए जोटा कि आमर कौन ना आमर थिंकिंग एबिलिटी आमर डिसीजन मेकिंग आमर इंटेलेक्चुअल पावर ओके रीजनिंग एबिलिटी को एनहांस करिथाए देन इट क्रिएट बैलेंसेस बिटवीन ईद एंड सुपर इगो इगो कौन करथाए ना आमर सुपर इगो और ईद को नेकी बैलेंसिंग लेवल रे रखिथाए इगो इज डेवलप्ड इन अर्ली चाइल्डहुड जदि आमर ईद रे आम जन्मरू रही आसुची बट इगोटा आमर अर्ली चाइल्डहुड रु स्टार्ट होता है देख ईदटा कौन ना गोटे बेसिकल जिनस जब मन रखा ईद हूँ गोटे मैंने जिदिया पिला ओके गोटे मैंने नंबर वन जिदिया पिला
जोटा कि से किछि बुझीबनी तार जहाँ तार सेटा दरकार माने ताକୁ दरकार ओके गोटे ताକୁ रोजर दरकार माने से पिलाटा रोजर खेलना किणिब बस दरकार माने से बस खेलना किणिब ओके ता जिद्दी से सेया किणिब बट इगो कौन करिवो एटी ना तार कॉन्शियसनेस ओके तार थिंकिंग एबिलिटी रोची डिसीजन मेकिंग पावर रोची इंटेलेक्चुअल रोची जते बापा पाखरे पैसा नाही तो से भाबिबो जे एटा नेबी ना नेबिनी ओके एटा नेबी ना नेबिनी बापा मते देबे ना देबेनी बट सुपर इगो आमको कौन करिवो ना इट इज द मोरल सेंस एंड जनरेटेड बाय आइडियल इट इज अ डेवलप इन लेट चाइल्डहुड फ्लूइड स्ट्रक्चर ऑफ सॉरी देख सुपर इगो कौन करता है ना आमको कहब देख इगो कौन कहब जे नेबी ना नेबिनी बोली बट सुपर इगो कहब जे नाई ने ना बापा पाखे तो पैसा नथिबो आउ देखिबा आउ के पर नै जिबा आउ बट एटी आमर इगो कौन करिवो ना दी जन को बैलेंस करिवो ओके हौ जदि बसटा न नेबी ताठारु कम रेट जो खेलटा अच्छी से नहीं जावा ना जो देख ईद कौन कर जिद्दी कर पूरा जिद्दी करदेव जो मत से जिनसा दरकार बट सुपर इगो कहब कि नाई बापा पाखे पैसा नथिबो आउ देखिया पर केबे नबा आउ एमती कौन माने पर केबे नबा जदि इच्छा नहीं थाउ नले आउ कौन केबे देखिदेबा आउ एमती एमती पैसा आसले पुणी नबा आउ बट इगो कौन करिवो ना हौ देखिबा जदि सेटा न होउची जदि बेसी पैसा नाही जदि बड़ बड़ जिनिस हमକୁ न मिलुची आमे छोटा जिनिसरे चलै देबा ओके सुपर इगो कौन करिवो ना ताकू बैलेंस करिवो ईद को बैलेंस करिवो जिद्दी को बैलेंस करिवो बट आमर जो सुपर इगोर जो नेचुरल जिनिस रोची ताकू भी बैलेंस करिकी सी चलिबो ओके देन ईद आई वांट दिस सी कौन करिवो ना आई वांट दिस मते एटा चाहे दरकार इगो कौन कहबो दिस इज नॉट द वे टू गेट इट ओके सुपर इगो कहबो लेट्स वर्क ऑन इट ओके एटा भाबिबो ये जिते कहब जे आई वांट दिस सुपर इगो भाबिबो जे आ ऊपर नबा ना नबानी एमती बट इगो कौन करिवो दिस इज नॉट द वे टू गेट इट ओके इगो भाबिबो जे ना सेटा नबानी आउ ता जो कम कौन अच्छी सेटा नहीं जिबा ना टोटल नबानी ओके इगो ए जिनसटा तार इंटेलेक्चुअल नॉलेज हिसाब से भाबिबो जे हौ न नबानी आउ थाउ नले आउ ओके देन आसिला सिगमंड फ्रॉइड डिवीजन ऑफ माइंड कौन ना टोपोग्राफिक एस्पेक्ट आउ डायनामिक एस्पेक्ट ओके देन आसिला टोपोग्राफिक एस्पेक्ट कौन इट इज मीन्स माइंड एंड बॉडी आर इंटररिलेटेड एंड एक्ट ऑन ईच अदर ओके जो कि कौन ना माइंड आउ बॉडी इंटररिलेटेड रोचंती जो माने कि एक्ट करूचंती ईच अदर हिसाब रे देन माइंड फंक्शन हैज 3 लेवल्स कौन ना कॉन्शियस सबकॉन्शियस आउ अनकॉन्शियस ओके तो हम 3टा लेवल रोचे माइंड रो गोटे कॉन्शियस सबकॉन्शियस आउ अनकॉन्शियस ओके कॉन्शियस माइंड कौन अवेयर ऑफ मेंटल प्रोसेस कॉन्शियसनेस होची हमर मेंटल प्रोसेस ये रे हमें अवेयर रहिबा देन सबकॉन्शियस कौन ना मेंटल प्रोसेस इज नॉट कॉन्शियस बट वी आर अवेयर ऑफ देम इफ वी ट्राई टू रिकॉल ओके सबकॉन्शियस माइंड कौन आम गोटे जिनस को मन रखिथा बट भूल जाता बट ताको आम रिकॉल कर जोटा कि आम सबकॉन्शियस माइंड रे रही जाइथिबो बट अनकॉन्शियस कौन नॉट अवेयर फ्रॉम मेंटल प्रोसेस फ्रूइड थ्योरी गिव ग्रेट स्ट्रेस टू अनकॉन्शियस माइंड ओके अनकॉन्शियस माइंड रे आम जिते जहाँ मन रखिले भी आम किसी भी मन रहिबा नाही जो जेहेतु आम से जिनस प्रति ध्यान देई नाहु देन डायनामिक एस्पेक्ट कौन ना ईद इगो सुपर इगो साइको एनालिटिक थ्योरी दिस इज द थ्योरी वाज गिवन बाय सिगमंड फ्रॉइड अकॉर्डिंग टू हिम man personality is agreement out of the ego and super ego okay it regards the general ego is the individual ego super ego is man's ego okay id कौन ना regress to the general ego को regress करछि id ego कौन करछि ना individual ego को regress करछि then super ego कौन ना man's ego को okay id कौन ना I want chicken burger id कहबो मते chicken burger दरकार but ego कहबो eat a small piece okay किंतु फास्ट सुपर इगो भाबिबो यू आर ऑन डाइट प्लीज स्टॉप ओके देखो फास्ट एठी ईद भाबिला कोन ना मते चिकन बर्गर दरकार बट सुपर इगो कहबो तू डाइट रे अछु ओके स्टॉप कर भाबिया माने बंद कर तते जिंस खाइबा को दरकार नाही बट एठी इगो कोन कहबो ईट ए स्मॉल पीस चलो हो कार मन दुख न हो गोटे छोटो पीस टे खाई नबा सो लेट्स हमर सरला यूनिट कंप्लीट